Welcome, my dear ones. Again, we come back to Footprints Without Feet, and we had stopped at page number 28, and first three paragraphs we had done. Now we shall start from the fourth paragraph, page 28, with line by line explanation. Till now, we had seen that Griffin had become invisible and he was walking down the streets of London. Now we see that what happens ahead. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked 2 rooms at the local inn. Now he wants to go away from London because it is very crowded. He has to save himself. Wherever he was going, people are there. So he thinks that he should go to Iping. This is a very quiet village and it is snow covered. It is the month of winter. We have already seen this. Now, here, because it is snow covered, generally people do not come to this place Iping. So he feels that he will be isolated over there. तो उसको लगता है कि वो अलग से रह सकता है आइपिंग जाने से, क्योंकि क्राउड से, लोगों से दूर हट के लंदन से उसको कहीं चले जाना चाहिए जहाँ पे लोग उसका पीछा ना करें, जैसे कि 2 लड़के पहले कर रहे थे. सो he was eager to move away from London, and so he booked 2 rooms in the local inn, and in the local inn of Iping. The name was Coach and Horses. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. So now, ये बहुत unusual था. It was really very strange that somebody has come over there, a person has come over there in the month of winter. As I told you, it is snow covered. So generally people do not come over there. A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. Tongues wagging means people started talking about him. Very uncommon appearance, strange it was, weird appearance it was, having bandage on his face and then the coat up till his neck and a hat and the spectacles that he was wearing. So very uncommon sort of an appearance. And that's the reason people started talking about him. Mrs. Hall, the landlord's wife, made every effort to be friendly because they did not get any customer during the winter. So Mrs. Hall was extra careful in the courtesy that she was providing to him. Mrs. Hall को लगा कि और तो कोई कस्टमर आएगा नहीं विंटर में, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से रखा जाए. But Griffin had no desire to talk and told her, "My reason for coming to Iping is a desire for solitude." लेकिन ग्रिफिन को बात करना पसंद नहीं था. वो बोला कि हमको यहाँ लोनलीनेस चाहिए, हमको एक आइसोलेटेड रूम चाहिए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं. एंड so he says that he did not want to talk to people, to mix with people. I do not wish to be disturbed in my work. Besides, an accident has affected my face. So he says, हमको नहीं चाहिए. It's my accident. मेरा face पूरा injured है, इसीलिए हम बैंडेज बांधे हुए हैं. I don't want people should be disturbing me. हमको secluded life चाहिए, हमको अकेलापन चाहिए. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. अब मिसेस हॉल को लगा कि एसेंट्रिक मीन्स मैड, ये क्रेजी साइंटिस्ट है, तो इसका ठीक है क्योंकि पैसा एडवांस में दे चुका है, ही हैज पेड इन एडवांस. सो let us satisfy him. If he wants seclusion, अगर अलग रहना है, अकेले रहना है, let him be. What does that matter to me? Okay, so I am ready to tolerate his strange habits and irritable temper. So Griffin has gone over there and he has started showing his anger. Irritable temper is anger, short temper. But the stolen money
did not last long, and presently Griffin had to admit that he had no more ready cash. So, if you remember in the Drury Lane, from that shop, he had stolen the cash. तो वो कैश कितना दिन चलेगा? वो कैश तो खत्म हुआ. And you find that he did not have any more ready cash then. He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. So what did he say? That मेरा चेक आने वाला है, so I am going to pay you then. अभी मेरे पास ready cash नहीं है, but I am going to pay you when the check comes. Shortly afterwards, a curious episode occurred. Very early in the morning, a clergyman and his wife were awakened by noises in the study. Now, something very strange happened. So here we find that a clergyman means priest of the church. तो जो priest था चर्च का, उसके घर में अचानक से एक दिन सुबह भोर, it is early morning, then some noise was heard in the study room. कुछ तो आवाज आया. And because एकदम भोर था, it was early morning, so the noise reached their room where they were sleeping. Creeping downstairs, they heard a chink of money being taken from the clergyman's desk. Now you find that clergyman's wife, she awoke him. ठीक है, उसको जगाई और उसको बोली कि देखो नीचे कुछ आवाज हो रहा है. तो अब वो क्या किया, हाथ में एक पोकर लिया. दैट वाज वन रॉड, ओके, with which the chimney they poke it. तो उसको लेके वो नीचे आया. वुडन स्टेयर्स था एंड वो नीचे आने लगा क्लर्जीमैन्स डेस्क. Without making any noise and with a poker grasped firmly in his hand, the clergyman flung open the door. बिना कुछ आवाज किए नीचे आया. And then he had armed himself with that poker. तो वो दरवाजा खोला, झटक के खोला, so that वहां से कोई भाग ना सके. कौन है अंदर देखना था, क्योंकि पैसे का आवाज, चिंकिंग, जिंगलिंग नॉइज. ज़्यादा पैसा, अगर पैसा को हम लोग हैंडल करते हैं तो आवाज़ आता है, तो वो आवाज़ उसको सुनाई दे रहा था. तो वो खोला कि कौन है अंदर देखने के लिए. सरेंडर, एंड तुरंत चिल्लाया. ही सेड सरेंडर. Then to his amazement, he realized that the room appeared to be empty. But nobody was there in the room. He saw every side, but he could not see anybody. कोई भी नहीं था उस रूम में. He and his wife looked under the desk, behind the curtains, and even up the chimney. तो कहाँ गया? तो वो देखने लगा, कर्टन्स के पीछे देखने लगा, ठीक है, एंड डेस्क के नीचे भी देखा, खोजा उसको, लेकिन कहीं तो नहीं था. There wasn't a sign of anybody. Yet the desk has been opened and the housekeeping money was missing. लेकिन चोरी तो हुआ है. जो हाउसकीपिंग मनी था वो मनी वहां से मिसिंग था, दैट वाज मिसिंग. और डेस्क भी खुला था, तो कोई तो आया था. दरवाजा बंद था, आवाज आया, दरवाजा खोलने पर कोई नहीं दिखा. समथिंग वेरी स्ट्रेंज, extraordinary affair, the clergyman kept saying for the rest of the day. So early morning they searched the whole room, and really it was extraordinary. The person had not gone out from that room, but still they were not finding him. तो कहाँ गया? रूम बंद था, कहीं से कोई और एग्जिट नहीं था, वो लोग वो कोई और भाग नहीं सकता था, तो कहाँ गया? पैसा भी मिसिंग था. But it was not as extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later that morning. अब ये तो हुआ क्लर्जीमैन के घर में. His name was Mr. Bunting. अब इधर मिसेस हॉल के जहाँ पे वो रह रहा था, ग्रिफिन, वहाँ भी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ. वो क्या एक्स्ट्रॉर्डनरी हुआ? फर्नीचर वहाँ का कुछ अजब बिहेव करने लगा. The landlord and his wife were up very early and were surprised to see the scientist's door wide open. ये साइंटिस्ट कंटिन्यूसली दरवाज़ा बंद रखता था. उसको पसंद ही नहीं था
कि कोई आए, कोई खटखटाए, कोई कुछ बोले उसको। तो पहला बार था कि उसका डोर वो खुला हुआ था, इट वॉज ओपन। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड द रूम। तो generally he is furious. Furious means angry. If anybody would happen to enter the room, he would become very angry. वो गुस्सा हो जाता था, कोई अगर उसके रूम में घुसता था तो कैसे खुला छोड़ दिया ये दरवाजा को। The opportunity seemed too good to be missed. Now this was an opportunity for Mrs. Hall and Mr. Hall to enter into the room to see what is this man doing. तो इट वॉज टू गुड टू बी मिस्ड, उसको मिस नहीं किया जा सकता था, इतना अच्छा चांस मिला है। दे पीप्ड राउंड द डोर, सॉ नोबडी एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट। अब वहाँ दरवाज़ा, दे ओपनड इट अ चिंक, थोड़ा सा खोला, झांका, कोई दिख ही नहीं रहा था। तो अब टाइम मिला, अगर कोई है नहीं तो अंदर घुस के देखे, इन्वेस्टिगेट करे क्या है उसके रूम में, कौन है, क्या कर रहा है। The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up for some time. अब हम लोग तुरंत जब बेड से निकलते हैं तो बेड गर्म रहता है। कभी कभी ठंडा के मौसम में कोई अगर बेड में पहले से सोया है या फिर कोई उठता है, चेयर से उठता है, चेयर से, तो एंड वी सिट ओवर देयर, हम लोग अगर बैठ जाते हैं तो हम लोग को बहुत अच्छा लगता है, गरम गरम बेड है या चेयर है, द सेम। तो वो ठंडा था बेड, तो ये दिखा रहा था दैट ही वॉज अप फॉर सम टाइम, सो ही मस्ट बी, पहले से वो जगा हुआ है, अभी अभी तुरंत तो नहीं उठा है। एंड द स्ट्रेंजर स्टिल, द क्लोथ्स एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वोर वर लाइंग अबाउट द रूम। एंड और स्ट्रेंज क्या था, जो क्लोथ्स वो पहनता था, जो बैंडेज उसका मुंह पे बंधा हुआ था, वो भी बिखरा पड़ा हुआ था, दैट वॉज ऑल्सो ऑन द बेड। So that is means, so where has he gone without clothes or without that bandage? कहाँ था वो? So all of a sudden Mrs. Hall heard a sniff close to her ear. लेकिन कोई ऐसे खींचा, a sniffing noise. So this man Griffin, he was utter naked in this cold weather. So ठंडा तो उसको लगता था, ठंड पकड़ लिया था, that's the reason he was sniffing, and some closely she heard somebody sniffing. A moment later the hat on the bedpost leapt up and dashed itself into her face. So bedpost, बेड का चारों साइड में कॉर्नर्स में पिलर्स जैसा रहता है, उसमें मच्छरदानी टांगने के काम आता है, वो एक पोस्ट के ऊपर वो हैट रखा हुआ था। तो वो हैट सडनली वो डैश हुआ, चार्ज हुआ मिसेस हॉल के मुंह के तरफ, एंड सो स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज स्ट्रेट एट हर, लेग्स फोरमोस्ट, एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर। एंड जैसे उन लोग के तरफ आया तो उन लोग को डर लग गया। ओके, द एक्स्ट्रॉर्डिनरी चेयर पुश देम बोथ आउट ऑफ द रूम। अब चेयर भी ऊपर आया, चेयर का पैर उन लोग के तरफ था एंड चेयर उन लोग के तरफ जा रहा था, तो उन लोग भी पीछे चलते गया। चेयर अब उन लोग को ढकेल के कहाँ ले गया, दरवाजे के बाहर। सो इट पुश देम आउट ऑफ द डोर एंड देन अपीयर टू स्लैम एंड लॉक द डोर आफ्टर देम। एंड दरवाजा अपने आप बंद हो गया, इट वॉज लॉक्ड, इट वॉज स्लैम्ड एंड इट वॉज लॉक्ड टोटली। तो क्या हुआ, लेट अस सी in the next part, children. Thank you. Goodbye for now. Have a good day.